Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 25th and 26th of May. Session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we are talking about postage stamp that was launched or released to honor the King Peresara Muthiar. Right, then we will be talking about Ministry of Earth Science. It has hosted the second Blue Talks ahead of the UN Ocean Conference 2025. Then we will be talking about India's first Mahots village in Madumalai Tiger Reserve, right, that is in Tamil Nadu. Then UP has launched India's first Vistadome Jungle Safari train. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 AM in the morning on regular basis. So do watch these videos. These are quite helpful for competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. Union Minister of State L. Murugan has announced the release of a postage stamp to honor the King Pararasar P. Muthiar. Right, take a note of this. This was during the 1350th birth anniversary celebration. This was in Trichupalli, Tamil Nadu. This commemorative postage stamp will bear the image of the King Muthiar, right, and the postage stamp will be released in 2026. Take a note of this, important. Right, apart from this, you can see here this Department of Post, right, they also collaborated with Tamil Nadu Forest Department as has released a special cover that is for Born to Fly campaign as a part of the International Day of Biodiversity that is observed on 22nd of May. So a postage stamp was launched here. Moving on, here you can see Born to Fly campaign, then so a special cover was also launched. Next is Ministry of Earth Science hosted the second edition of the Blue Talks ahead of the UN Ocean Conference 2025. Take a note of this. Here you can see Ministry of Earth Science that collaborated with Embassy of France and the Embassy of Costa Rica in India, and they hosted the second Blue Talks at the Prithvi Bhavan in New Delhi. The focus here was on building on the success of the inaugural Blue Talks that was held, that is the first edition that was held in 2024 Feb month, and this time it is the second edition of it. Also, the conference aims to promote the conservation and sustainable development of the oceans that aligns with the Sustainable Development Goal 14. What is this Sustainable Development Goal 14? This is focusing on the life below water. Correct? Take a note of this. Next is Tamil Nadu. Tamil Nadu has inaugurated the India's first Mahots village in Madumalai Tiger Reserve. Take a note of this. Here you can see Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin inaugurated the first Mahots village in the Thekapadu Elephant Camp in Madumalai Tiger Reserve, that is in Nilgiri district, that features 44 eco-friendly houses built by the Tamil Nadu Forest Department for a cost of 5.6 crore rupees. This will enhance the living condition of the Mahots and the Kawadis who have served generations in the elephant management. Right, take a note of it. Moving on, next is Uttar Pradesh has launched the India's first Vistadome Jungle Safari train. Take a note of this. This is the first Vistadome Jungle Safari train launched by UP government and Indian Railways together. This service will connect Kataringhat Wildlife Sanctuary, that is in the Bahrainch district of UP, with the Dudhwa Tiger Reserve in the Pilibhit district that covers 107 km forest route. Here the train will be covering 9 stations or running between the 9 stations, and the journey will take around 4 hours and 25 minutes, and for this you have to spend 275 rupees per person. Next is India has launched the Spiced scheme that will boost the spice export. See, if you remember in early days, Kerala was one of the major destinations for the spice exportation, and even the
English people, when they ruled India, they used to export spices in large quantity from India to abroad, right? So now India is focusing on this and we want to boost our spice export, correct? And here you can see Spice Board of India, that comes under the Ministry of Commerce and Industry. They have launched the sustainability in spice sector through progressive, innovative and collaborative interventions for export development, that is spiced scheme. This scheme will strengthen India's spice sector by enhancing sustainability. It will foster innovation and boost the export development. Take a note of this, students, important. Here you will be seeing cardamom, right? Various organic spices, turmeric, mint, right? Polishers, various dryers, slicers, they will also be promoted here. Correct? Next is Ministry of MSME. They partnered with DKPTO to boost the IPR access. What is this DKPTO? This is your Denmark based Danish Patent and Trademark Office. So Ministry of MSME under the Government of India, they partnered with Danish Patent and Trademark Office under the support for commercialization of the intellectual property program. This collaboration will aim to streamline the acquisition and commercialization of IP rights for Indian MSMEs, thereby bolstering the innovation and competitiveness in this sector. Right? What this will do is, in simple terms, it will help the MSMEs to acquire all the patents and IPs they want for their product or services that they are working upon. Correct? Also, in this program, 70% of the cost will be bared by the ministries, right, for these patents and these IP rights. Moving on. Next is international affairs. 2025 World Hydrogen Summit and Exhibition was held in Netherlands. It was held from 20 to 22nd of May, right? And this was the 6th edition of the World Hydrogen Summit and Exhibition. That is the world's largest dedicated hydrogen event, scheduled from 20 to 22nd of May to be held in Rotterdam, Netherlands. There was a theme, students. Theme being, take a note of this. Theme is important. Navigating challenges with solid form of financial investment decisions. Right? And from who represented India here? Santosh Kumar Sarangi, our Secretary of the Ministry of MNR, Ministry of New and Renewable Energy, represented India at this summit. Right? So take a note of the theme. From when to when this was held? From 20 to 22nd of May it was held, and this is the 6th edition of this event. Moving on. Next is WOAH report. What is this WOAH report? This is your World Organization for Animal Health, right? So they have recently released a report that is animal disease spreading to new regions. Nearly half of them pose threat to humans. See, there is a term zoonotic. What is a zoonotic disease? Zoonotic disease are those diseases that are transferred from animals to humans. Right? So a report was recently released. This is the first state of the world's animal health report. The report highlighted that infectious animal disease are spreading to new regions and species which were previously unaffected by them, and nearly 47% of them have potential of zoonotic transmission, that is from animal to humans. Correct? Take a note of this. If we talk about WOAH that launched this report, the Director General here is Dr. Emmanuel Soubran, headquartered in Paris, France, and UNESCO's headquarters is also in Paris, France. It was established in 1924. Moving on. Next is India advocates fair trade and digital inclusion during the 15th BRICS Trade Ministers meeting that was held in Brazil. We know the current chairmanship of BRICS is with Brazil, right? So recently it was the 15th BRICS Trade Ministers meeting, right? It was held under the presidency of Brazil, and there was a theme here. Theme being strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance, right? And India was represented here by whom? Yashveer Singh, right? He is economic advisor under the Department of Commerce, who represented India. Also, our country proposed a 30 for 30 initiative that aims to introduce 30 reforms to commemorate the 30th anniversary of the World Trade Organization in 2025. Apart from this, our country also hosted a virtual capacity building session on the digital transformation for the BRICS nations. Your homework is to tell me, students, which is the country that has joined BRICS lately, and also the country that has joined the New Development Bank lately. So here you can see 30th for 30 initiative, and India hosted this virtual capacity building session on digital transformation.
Next is RBI data was recently released. It is talking about the outward remittance under the LRS liberalized remittance scheme. It has declined 6.85% to 29.56 billion in FY25. Also, the amount of FDI that used to come into India has dropped by almost 90% this year. Right? If we look about remittance, remittance are of two types. One is your inward remittance and another is your outward remittance. Right? Inward remittance is when money from different parts of the world comes to India, and outward remittance is when money goes from India to out of the country. Right? So recently a data was released by RBI, right, under this liberalized remittance scheme, that states that the outward remittance, that is the money going from India to outside, right, it has declined by almost 6.85% to 29.56 billion dollar. Also students, if you remember, recently USA, they have imposed a 5% duty, that is tax, on all the Indians who are sending their money from USA to India. So what it is your inward remittance, that is from USA to India the money is coming. So on that a 5% charge has been implemented by Donald Trump in their latest news, right? Take a note of this also. So coming back, if we talk about the outward remittance, right, a decline of 6.85% has been seen here. Correct? Next is, if we look at some of the key findings here, the outward remittance surged by 30% month on month, nearly to 2.6 in March 2025 compared to 1.96 billion in Feb 2025. And this growth was mainly driven by increase in the deposits and family maintenance, right? And this data that we were discussing is for FY25, that is 2024 to 2025. And this data that we are just seeing here, an increase, it is for 2025 to 2026. Correct? Next is NRI deposit inflow surged to 11-year high of $16.2 billion in FY25. What are the NRI deposit inflows? That is non-resident Indian deposits in Indian banks are increasing. That means the people, those who are working outside the NRIs, right, they are sending their money back to India, and we are seeing a 11-year high in that is at $16.2 billion. The total inflows reached 16.16 billion, marking a 9.9% year-on increase in FY25. Further, if we see the FCNR, right, this inflow, it rose 11%. NRERA inflows grows by $4.7 billion, and NRO, that is non-resident NRO account inflows rose by 4.4%. Right? Take a note of this also. Moving on, NRO is your non-resident ordinary. Right? Next is RBI has established a 6-member PRB that will be headed by RBI governor to oversee the payment systems in India. I repeat, RBI, that is your Reserve Bank of India, they have notified the formation of a 6-member PRB, that is your Payments Regulatory Board, under the Payment Regulatory Board regulations of 2025. And why this board has been established, 6-member board, it is to regulate and supervise the payment systems in India. Who will be the chairman of this 6-member board? The current RBI governor, that is Sanjay Malhotra. Take a note of this. Right? Apart from this, remember, RBI has also imposed a penalty on Union Bank of India and Transactory Technologies for regulatory non-compliance. Right? So RBI imposed a penalty of 63.6 lakh rupees on Union Bank of India and 40 lakh rupees on Transactory Technologies. If we talk about RBI, we just saw who is the governor here, Sanjay Malhotra, who will also head this 6-member PRB committee. Next, Vivriti Fund, they have secured $20 million funding from the Development Bank of Austria. I repeat, Chennai, Tamil Nadu based Vivriti Asset Management, they secured a fresh commitment of $20 million in senior debt from Vienna, Austria based Development Bank of Austria for its Vivriti India Retail Asset Fund that will bolster the fund's capital base to $165 million. Next is Science and Technology. Here Agnikul Cosmos, they have successfully fired the India's first electric motor driven semi-cryogenic engine test firing. This Agnikul Cosmos, that is Chennai, Tamil Nadu based space startup, right, they have successfully fired the India's first electric motor driven semi-cryogenic engine that will power the upcoming Agniban launch vehicle. And this is the first of its time an engine of this kind has been developed and tested in India. Right? If we talk about this semi-cryogenic engine, it offers higher specific efficiency than solid or purely liquid fueled engines.
If we talk about Agnikul Cosmos, who is the chief executive officer here? Srinath Ravichandran, headquartered in Tamil Nadu, established in 2017. Next is India's Samtel Avionics and Malaysia's ATSC forged a strategic partnership for RMAF Sukhoi 30 MKM fleet. I repeat, from India it is New Delhi based Samtel Avionics Limited. They partnered with ATSC, that is your Aerospace Technology Systems Corporation, and they will jointly support the Royal Malaysian Air Force fleet, especially with the Sukhoi 30 MKM aircraft. Correct. Here you will be seeing the repair of this aircraft, right, the maintenance of this aircraft, and all the post sale related help will be provided under this agreement. Correct. And all the MRO services will be coming here. MRO is your maintenance, repair and operation services. Next is related to sports students. Amity University Online, they signed a memorandum of understanding with Hockey India to transform the life of the athletes. I repeat, this Noida UP based Amity University, they signed this MOU with New Delhi based Hockey India that is aimed at providing comprehensive educational opportunity to the hockey players at the international, national and state level. Right. Here you will be seeing various educational scholarship programs will be provided to them. Under this program, the athletes here will be offered up to 100% scholarship through the CHAMPS initiative. What is this CHAMPS initiative? This is Celebrating Heroes with Amity Merit Program Scholarship, right? So question can be asked that CHAMPS initiative or CHAMPS scholarship for the athletes was launched by whom? It was launched by Amity University. Next is important day, students. International Day of the Markhor Day is observed on 24th of May, right? Markhor, this is a goat as you can see it in the picture, and it is specifically found in areas such as Afghanistan, India, mountainous regions, right? In those mountainous regions of Afghanistan, India, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and so on. And this year it was the second observance of this day, International Day of Markhor, and it is observed to raise awareness about the conservation of these markhors. Next is World Schizophrenia Awareness Day, observed on 24th of May. This day is observed to raise awareness about schizophrenia, that is a mental disorder that affects millions globally. There is a theme for this day, students, that you need to remember, that is rethink the label, reclaim the story. This is the theme here, right? And as you can see here, this purple ribbon is the symbol here. Next, this day is also known as Pineal Day. Pineal Day. Moving on, next is Commonwealth Day in India, observed on 24th of May. This day is to raise awareness, or this day is basically to commemorate the birthday of Queen Victoria. Right, she was born in 1819 on 24th of May. Correct. Generally, this day is observed on the second Monday of March month, right? Take a note of this. So this year we are observing this on 24th of May, right? So Indian Commonwealth Day observed on 24th of May, and generally the Commonwealth Day is observed on the second Monday of the March. There is a theme also here, Together We Thrive. Next is state news. Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla inaugurated the 5th Shirui Lily Festival in the Ukhrul. I repeat, Ajay Kumar Bhalla, the Governor of Manipur, he inaugurated the 5th edition of the Shirui Lily Festival at the Shirui village in Manipur, and it is to commemorate the 75th anniversary of the discovery of the rare Shirui lily and to promote sustainable tourism there. Next is Maharashtra government. They have launched Mahavistar application ahead of the Kharif season. Right, this is an AI based application. This will be a technological initiative that will transform the agriculture sector at the Kharif season, reviewing the meetings organized at the Yashwantrao Chavan Center in Mumbai, Maharashtra. Right, also this AI will have a chatbot that will provide the personalized suggestions on the crop selections, sowing methods, fertilizers usage, water management and many more. Right, so that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. In April, Indian Army and DRDO, they successfully carried out 4 flight tests of the Army version of the medium-range surface-to-air missile system from the coast of Odisha. Next
Which Indian private aerospace manufacturer conducted the static fire test of Kalam 100 engine, the third stage of the Vikram 1 launch vehicle in Nagpur, Maharashtra? It is Skyroot Aerospace Private Limited. Right? Take a note of this. And this Vikram 1, it is India's first private commercial orbital launch vehicle designed to carry up to 480 kilograms of payload to a 500 kilometer into the low Earth orbit. And it has been named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of India's space program. Next is identify the name of the launch vehicle for which Solar Defense and Aerospace Limited, that is a subsidiary of Solar Industries India Limited, had successfully developed the propulsion system including the igniter and third stage rocket motor. So name that launch vehicle. It is Vikram 1 satellite. Next, mention the Russian aircraft which carried NASA's astronaut Jonathan Yong-John Kim and Roscosmos cosmonaut Sergei Viktorovich and Alexei Vitalyevich to the International Space Station in April 2025. So recently the rocket that was used here is Soyuz MS-27. This is the rocket that was used here. Next, name the long-range glide bomb successfully tested by DRDO using the Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet in April 2025. It is Gaurav. Right, this is the long-range glide bomb, the name of which is Gaurav. Next, mention the state where DRDO successfully conducted the field trial of the land version of the vehicle-mounted Mark 2A laser-directed energy weapon. So, which is that state? It is Andhra Pradesh. Take a note of it. And with this, our country, India, we became the fourth country to have such kind of a system after USA, Russia, and China. Next, pop star Katy Perry and 5 other women were launched into space and returned to Earth using the New Shepard rocket. Name the company that carried out this mission. It is Blue Origin that carried out this mission. So total of 6 women went into space through their first space trip with only women, right? Next, identify the company that in April 2025 successfully conducted preliminary sea trials of 651 kilowatt water jet propulsion system for the Indian Navy under TDF, that is Technology Development Fund scheme of the DRDO. So which is that company? It is L&T, Larsons and Tubro. Next, Betavolt Technology Company Limited, based in Dash, unveiled a nuclear powered battery named BV100 capable of operating for up to 50 years on a single charge. So Betavolt Technology Company Limited, that is based in China, right? They have unveiled a nuclear powered battery that has been named BV100, which is capable of operating up to 50 years on a single charge. Next, in April 2025, Google, they have launched the 7th generation AI name chip, that is Ironwood. It is designed to accelerate AI applications involving rapid calculations to generate responses in AI powered systems. Next, in April, India commemorated the golden jubilee of the first satellite Aryabhatta, marking 50 years since its launch on 19th of April 1975. At that time, satellite was launched abroad Dash rocket from Kapustin Yar in Russia with assistance from Soviet Union, that is USSR. So question asked is that at the time this satellite, right, Aryabhatta was launched using Cosmos 3M rocket and it was launched from Russia, right? And it was 1975 when this Aryabhatta was launched on 19th of April. Next, in April, ISRO, they successfully developed and tested an indigenously made nozzle divergent using satellite alloy for the fourth stage of which launch vehicle? It is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Next, in April, which country launched the fourth indigenous military spy satellite using Falcon 9 rocket of SpaceX from Florida, USA, to strengthen their independent surveillance capabilities? It is South Korea. Next, in April, India dispatched the second batch of supersonic cruise missiles to Philippines under $375 million deal signed in 2022. Name the Indian-Russian joint venture company involved in this agreement. It is BrahMos Aerospace Private Limited. And also remember, Philippines is the first nation to buy these BrahMos supersonic cruise missiles from India.
right? And this deal was signed worth $375 million. Next, China has achieved a milestone in their internet infrastructure by launching the world's first 10G broadband network in its Sunan County in Hebei province. Next is identify the INS, that is Indian naval ship that successfully test fired the medium range surface to air missile also known as Barak 8 in the Arabian Sea. It is INS Surat. Next, which organization conducted 1000-second ground test of an active cooled scramjet subscale combustor in April, marking a critical advancement in India's hypersonic cruise missile development program. Which is this INS, or which organization conducted it? It was conducted by DRDO, Defense Research and Development Organization. Right? Take a note of it. Next, name the second generation geostationary orbit data relay satellite launched by China in April using the Long March 3B rocket from the Shenzhen Satellite Launch Center in southwest China. It is Tianlin 2. This is the name of the second generation geostationary orbit satellite. Next, in April, Amazon Incorporation, they successfully launched the first 27 satellites of its Project Kuiper broadband internet constellation from Florida. See this Project Kuiper, it is of Amazon, right? And Starlink is the project of. Next is our homework section, students. First question, Adani will be recently setting up a 5000 megawatt of hydropower plant in which country? Second question, tell me recently, if I ask you, which state is hosting and which city in that state is hosting the 72nd Miss World pageant? Tell me. Third question, right? And this itself has been a story recently because the Miss World recently suggested that she will be dropping out of it because of some issue that took place. You tell me that issue also. Moving to the third question, tell me recently who inaugurated the first 3 nanometer chip design center and where this has been inaugurated. Fourth question, tell me recently Nai Disha, this is an initiative launched by which organization and what is this initiative? Fifth question, tell me recently which is the first beggar free city of India, right? Name that city. So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 25 एंड 26 मई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक पोस्टेज स्टैम्प की जो लॉन्च किया गया है। देन हम बात करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ ब्लू टॉक्स की जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा होस्ट की गई। देन हम बात करेंगे मधुमलाई टाइगर रिजर्व में अभी पहला महोत्सव विलेज को यहाँ पे लॉन्च किया गया है जहाँ पे 44 हमें घर देखने को मिलेंगे। एंड इंडिया के पहले विस्टाडॉम जंगल सफारी ट्रेन को डिस्कस करेंगे जहाँ पे 9 स्टेशन के बीच में ये ट्रेन वर्क करेगी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। एंड मैनी मोर न्यूज़ इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टूडेंट्स हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो, आपकी लर्निंग बहुत बेटर होगी। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन इन्होंने अनाउंस किया रिलीज ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प जो ऑनर करेंगे किंग परारासर को, राइट, परारासर मुथियार को।
टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये एक तमिल किंग है, इनको ऑनर करने के लिए एंड इनका 1350th बर्थ एनिवर्सरी इस बार ऑनर किया, ऑब्जर्व की गई एंड इसके लिए यहाँ पे ये पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे लॉन्च किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी रिलीज किया एक स्पेशल कवर फॉर बॉर्न टू फ्लाई कैंपेन, राइट। ये आपका पार्ट रहेगा इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो कि 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, राइट। इन्होंने कोलैबोरेट किया एम्बेसी ऑफ फ्रांस के साथ एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका के साथ, जो कि इंडिया में है। एंड सेकेंड एडिशन ऑफ ब्लू टॉक्स के ऊपर यहाँ पे काम किया गया, जो कि पृथ्वी भवन न्यू दिल्ली में है, राइट। इन्होंने इस ब्लू टॉक्स के सेकेंड एडिशन को होस्ट किया है, किन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। जो पहला इवेंट हुआ था 2024 में, उसके ऊपर इसको लाया गया है, उसके यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया गया एंड वेरियस डाइवर्स ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिला। इस कॉन्फ्रेंस का जो एम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है, कौन सा ये है लाइफ बिलो वाटर, राइट। इसके ऊपर काम करने की यहाँ पे बात की गई कि कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस को हम प्रमोट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला महोत्स विलेज। महोत्स क्या है? ये आपकी एक कम्युनिटी है, राइट। महोत्स हो गया, महोत्स के अलावा हो गया आपका फिर एक कम्युनिटी और है, राइट। ये आपके बेसिकली लोग हैं जो कि आपके एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करते थे, एलिफेंट्स की देखभाल करते थे उनके लिए, राइट। तो महोत्स के लिए, ये कम्युनिटी के लिए यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 44 इको फ्रेंडली हाउसेस को बिल्ड किया गया है। कहाँ पर? इन द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 5.6 करोड़ की लागत से महोत्स एंड कवाडीज, राइट। ये वो लोग हैं जो कि एलिफेंट्स की मैनेजमेंट करते हैं, करेक्ट। तो पहली माहौत विलेज बनाई गई है कहाँ पर? ये आपकी मधुमलाई टाइगर रिजर्व में बनाई गई है इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 44 घर बनाए गए हैं इन लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को। ये जो सफारी ट्रेन है 9 स्टेशंस के बीच में रहेगी, 9 स्टेशंस रहेंगे इस सफारी ट्रेन में। इससे क्या होगा? टूरिज्म बढ़ता हुआ हमें दिखेगा, एक सर्विस की तरह हो गई ये टूरिज्म सेक्टर में। देन कतारानी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहरेच डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कनेक्ट करेगी दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ एंड 275 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आपको टिकट देखने को मिलेगी। 4 घंटे 25 मिनट की आपकी जर्नी रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया ने लॉन्च करा स्पाइस स्कीम को, जो कि स्पाइस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी। देखो हम जानते हैं इंडिया में जो स्पाइस है उनका मसालों का बहुत बड़ा कारोबार होता था। इवन जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने बहुत मसालों को इंडिया से बाहर भेजा था, एक्सपोर्ट करा था। तो सिमिलरली इंडिया चाहते हैं क्यों ना हम इस चीज़ पे एक एक्सपोर्ट करें, हम मार्केट्स को डेवलप करें, उन प्रॉपर एरियाज़ को कैप्चर करें जहाँ पर हम अपने स्पाइसेस को सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये स्पाइस स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। स्पाइस स्कीम क्या है? स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये आपकी स्पाइस स्कीम रहेगी, राइट। एंड इस स्कीम के अंडर क्या एम है कि इंडिया का जो स्पाइस सेक्टर है उसको एनहेंस किया जाएगा बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ब्लॉस्टरिंग द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। कार्डेमम, आपकी टर्मरिक हो गई जैसे हल्दी, चीनी, राइट, इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको एक्सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। इससे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इन्होंने पार्टनर किया DKPTO के साथ टू बूस्ट द IPR एक्सेस। DKPTO क्या है? डेनमार्क बेस्ड डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये आता है अंडर द सपोर्ट फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोग्राम के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने डेनमार्क बेस्ड डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया में जो MSMEs हैं हम उनको हेल्प कर सके कि उनकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उन पे वो अगर IP या फिर कोई पेटेंट लेना चाहते हैं तो वो इजीली उनको ग्रांट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके इस प्रोसेस को फाइल करने के लिए। इवन यहाँ पे बोला गया कि 70% ऑफ जो कॉस्ट जो लगेगी IP एंड पेटेंट फाइल करने के लिए वो यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा बियर की जाएगी, राइट। तो ये है आपका पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिली पेटेंट्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन कहाँ पर हुई? नीदरलैंड में हमें देखने को मिली, रॉटरडैम नीदरलैंड में। 20 से लेके 22 मई तक ये इवेंट होता हुआ दिखा। ये 6ठा एडिशन था इस वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन का। इसके अंडर एक थीम याद रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स, नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे संतोष कुमार सारंगी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, इन्होंने रिप्रेजेंट करा इंडिया को एट दिस समिट। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं WOAH रिपोर्ट। WOAH क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। आई रिपीट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस फ्रांस बेस्ड। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि जो एनिमल डिजीज है ना वो नए रीजन्स में फैल रही हैं एंड हाफ ऑफ देम पोज थ्रेट टू ह्यूमंस। मतलब 47% ऑफ ऐसी डिजीज, या फिर हम ऐसे इसको ऐसे समझें कि काफ़ी सारी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी बीमारियां होती हैं, तो वो एनिमल्स की जो बीमारियां हैं वो ऐसे रीजन्स में फैल रही हैं जहाँ पे वो पहले नहीं देखी गई थी, राइट। एंड इन बीमारियों में से 47% बीमारियां ऐसी हैं जो कि थ्रेट है एक जूनोटिक ट्रांसमिशन का। अब ये जूनोटिक ट्रांसमिशन क्या होता है ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती हैं, राइट। तो 47% डिजीज ऐसी हैं जिनका चांस है कि वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं बहुत सारी रिसर्च की जा रही है, बहुत सारी, अब कोविड के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई हैं जो पहले से ही रिसर्च कर रही हैं कि अगर कल को ऐसी कोई जूनोटिक डिजीज आ जाती है फ्रॉम सो एंड सो एनिमल तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सके, पहले से ही हम उनके लिए दवाई बना के रख सकें, राइट। अगर मैं बात करूं WOAH के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हम देख चुके हैं। डायरेक्टर जनरल यहां पे कौन रहेंगे? डॉक्टर इनैमुअल सोयब्रन। एंड 1924 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड पेरिस फ्रांस में ही किसका हेडक्वार्टर आ जाता है? यूनेस्को का। नेक्स्ट आते हैं फिर, इंडिया ने एडवोकेट किया फेयर ट्रेड एंड डिजिटल इंक्लूजन को एट द 15th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि ब्राज़ील में देखने को मिली। ब्राज़ील के पास इस बार हम जानते हैं प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, राइट। एंड ये 15वां एडिशन था आपका ब्रिक्स ट्रेड एंड मिनिस्टर्स मीट का। इसके अंडर एक थीम के अंडर ये हुई, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, राइट। इंडिया को रिप्रेजेंट किन्होंने किया इस मीटिंग के दौरान? यशवीर सिंह के द्वारा, राइट। इंडिया ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव प्रपोज किया, वो भी जरूर याद रखेंगे, 30 for 30 इनिशिएटिव। इसका एम है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 2025 में 30 एनिवर्सरी पूरी हो जाएगी तो 30 रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। इसी के अलावा इंडिया ने होस्ट किया वर्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन को ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ब्रिक्स नेशंस की। ब्रिक्स नेशंस में हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट कर सकें, राइट। एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया एज्यूम करेगा ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को 2026 में। इंडिया टू अज्यूम द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026। फिर आ जाते हैं आरबीआई डाटा, इनका डाटा रिलीज किया गया आउटवर्ड रेमिटेंस का। देखो रेमिटेंस दो तरह की होती हैं, एक जब इंडिया से पैसा बाहर जाता है, दूसरा जब बाहर से पैसा इंडिया में आता है, ये होती है इनवर्ड रेमिटेंस और ये होती है आउटवर्ड रेमिटेंस। तो डाटा कह रहा है कि जो आउटवर्ड रेमिटेंस है मतलब इंडिया से पैसा जो बाहर गया है उसमें हमें कटौती देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है ऑफ 6.85% टू 29.56 बिलियन इन FY25। मतलब 2024-25 का अगर हम डाटा देखें तो जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा था उसमें गिरावट देखने को मिली ऑफ 6.85%। एंड इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस देखें तो $100+ बिलियन का देखने को मिलता है। इवन अगर आप देखेंगे इनवर्ड रेमिटेंस पे भी एक थोड़ा सा हमें झटका देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि जो भी इंडियंस यूएसए से पैसा घर में भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं, तो 5% उन पे यहाँ पे टैक्स देखने को मिलेगा। मतलब अगर वो $100 भेजते हैं तो $5 उनको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है तो पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आउटवर्ड रेमिटेंस 30% से मंथ ऑन मंथ ग्रो करता हुआ दिखा 2.6 बिलियन इन मार्च 2025, राइट। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं एनआरआई डिपॉजिट इनफ्लोज पे। मतलब जो एनआरआईज पैसा इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला, 11 ईयर हाई का देखने को मिला ऑफ $16.2 बिलियन इन FY25। एक और चीज़ जो FDI है वो हमें गिरता हुआ दिखा है इंडिया में। लास्ट ईयर हम देखें तो ऑलमोस्ट 93% का गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें। कमिंग बैक, ये डाटा अगर हम RBI की बात करें तो संजय मल्होत्रा के द्वारा ये गवर्नर है, राइट। कमिंग बैक RBI, कमिंग बैक NRI, इनका डिपॉजिट इनफ्लोज यहाँ पे गिरता हुआ हमें दिखा। ये डाटा ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? RBI के द्वारा। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, RBI ने इस्टेब्लिश की एक 6 मेंबर की PRB कमेटी। ये 6 मेंबर की जो PRB कमेटी है, सबसे पहले PRB होता क्या आपको ये पता होना चाहिए। PRB है आपका पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, राइट। ये आपके जो भी पेमेंट्स रिलेटेड सिस्टम्स हैं इंडिया में उसको सुपरवाइज एंड रेगुलेट करेगा। एंड ये कमेटी 6 मेंबर की कमेटी रहेगी। इसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा? जो कि गवर्नर है RBI के, कौन? संजय मल्होत्रा जी, राइट। एंड
6 मेंबर्स यहाँ पे टोटल रहेंगे। इसी के अलावा आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई है यूबीआई पर एंड ट्रांजैक्टरी पर। अगर मैं यूबीआई की बात करूं तो 63.6 लाख रुपीस की पेनल्टी इम्पोज की गई। वहीं पे ट्रांजैक्टरी की अगर मैं बात करूं तो 40 लाख रुपए की यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, विवृति फंड, इन्होंने $20 मिलियन का फंड सिक्योर किया फ्रॉम डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया। राइट, ये जो फंड यहाँ पे सिक्योर किया गया है ये डेवलपमेंट फंड्स में काम आएगा, एसएमईज को ग्रो करने का काम आएगा, एमएसएमई को ग्रो करने का काम करेगा, ग्रीन फाइनेंसिंग में हेल्प करेगा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक पे आते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट फायरिंग को। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट फायरिंग रहेगी। आपके जो सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल है उससे ज़्यादा बेटर ये हमें देखने को मिलेगा। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ये स्पेस स्टार्टअप है। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? श्रीनाथ रविचंद्रन। 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, इंडिया के सैमटेल एवियोनिक्स एंड मलेशिया के एटीएससी फॉर्ज, मलेशिया के एटीएससी, इनके द्वारा फॉर्ज किया गया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फॉर्ज मतलब बनाया गया। राइट, तो एक पार्टनरशिप साइन किया गया है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को सुकोई 30 MKM फ्लीट में हेल्प किए करेंगे यहाँ पे। राइट, एमआरओ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज। इसी के अलावा पोस्ट सेल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा एंड डे टू डे जो वर्किंग रहती है इन एयरक्राफ्ट्स की, राइट, उसमें यहाँ पे सपोर्ट का टेक्निकल सर्विसेज में या टेक्निकल सिस्टम्स में सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेगा टू रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया हॉकी इंडिया के साथ, ताकि जो एथलीट्स हैं उनकी लाइफ को बेटर किया जा सके, उनको स्कॉलरशिप्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके एंड कोई भी वो एजुकेशनल प्रोग्राम में अगर एनरोल होते हैं तो 100% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे देने की बात की गई हॉकी एथलीट्स को। एंड चैम्प्स इनिशिएटिव के अंदर ये प्रोवाइड कराएंगे ये इनिशिएटिव 100% स्कॉलरशिप। चैम्प्स क्या है? सेलिब्रेटिंग हीरोज विद एमिटी मेरिट प्रोग्राम स्कॉलरशिप। तो पूछा जा सकता है कि चैम्प्स इनिशिएटिव किसका है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा 100% टू द हॉकी एथलीट्स? तो एमिटी यूनिवर्सिटी। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खौर डे, 24 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप ये देख सकते हैं ये गोट, ये मार्खौर है। ये जनरली आपको बेसिकली जो पहाड़ी एरियाज होते हैं जैसे इंडिया के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे ये देखने को मिलता है एंड ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। राइट, सिंस 1972 ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। एक और चीज़, इस बार हमने इसका सेकेंड ऑब्जर्वेंस किया, सेकेंड टाइम हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्क्रिजोफेरेनिया अवेयरनेस डे, 24 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है स्क्रिजोफेरेनिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, लाखों लोगों को ग्लोबली ये इफेक्ट करता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, रीथिंक द लेबल, रिक्लेम द स्टोरी, ये आपकी थीम रहेगी यहाँ पर। राइट, एंड स्क्रिजोफेरेनिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्पल रिबन इसका एक सिंबल रहता है। इसी डे को पाइनल डे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मई को। राइट, एंड इंडिया में इंडियन कॉमनवेल्थ डे 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं सिर्फ कॉमनवेल्थ डे की, तो सिर्फ कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ मार्च मंथ। राइट, जो कि 10 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। एंड हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉमनवेल्थ डे की, जो कि 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। राइट, 24 में 1819 को इनका जन्म हुआ था। राइट, सिंस देन हम ये डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी एक थीम है टुगेदर वी थ्राइव, ये मार्क करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट न्यूज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 5वां शिरुई लिली फेस्टिवल उखरुल में इन मणिपुर। देखो ये एक फेस्टिवल है आपका, इससे होगा क्या, टूरिज्म हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड शिरुई लिली, राइट, ये एक रेयर टाइप का प्लांट है जो यहाँ पे डिस्कवर किया गया, जिससे यहाँ पे टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। इसीलिए ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसका 5वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाविस्तार एप्लीकेशन को लॉन्च किया अहेड ऑफ खरीफ सीजन।
खरीफ सीजन में फार्मर्स की हेल्प करने के लिए ये एक एआई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, राइट। इसमें आप देखेंगे एक चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, जिससे एक पर्सनलाइज्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी टू द फार्मर्स रिलेटेड टू उनकी जो भी वो क्रॉप्स कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके की भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे फर्टिलाइजर से रिलेटेड, चाहे कितना पानी देना चाहिए, किस टाइम पे पानी देना चाहिए, क्या डिजीज इफेक्ट कर दिया उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह, सारी चीज़ों की यहाँ पे हेल्प इनको मिलती हुई दिखेगी इस महाविस्तार एप्लीकेशन से, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। इन अप्रैल इंडियन आर्मी एंड डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली कैरी आउट कराया 4th फ्लाइट टेस्ट ऑफ द आर्मी वर्जन ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ये टेस्ट करे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ने कंडक्ट करा स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ कलाम 100 इंजन। ये 3rd स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का इन नागपुर, महाराष्ट्र। तो ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया स्टैटिक फायर टेस्ट कलाम 100 इंजन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल फॉर विच द सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया प्रोपल्शन सिस्टम जो इंक्लूड करता है इग्नाइटर को एंड 3rd स्टेज रॉकेट मोटर को। तो वो है विक्रम 1 सैटेलाइट। नेक्स्ट, उस रशियन एयरक्राफ्ट का नाम बताओ जिसने कैरी किया नासा के एस्ट्रोनॉट को और 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन अप्रैल 2025। तो सोयूज MS-27 ये वो रॉकेट है जिन्होंने एक नासा के एंड 2 रॉसकॉस्मोस के कॉस्मोनॉट्स को ISS पे ये ले गया। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसको टेस्ट किया गया बाय डीआरडीओ यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। तो वो है गौरव, ये है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किसके द्वारा करा गया, डीआरडीओ के द्वारा। कौन सी एयरक्राफ्ट की मदद से करा गया, सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट की मदद से किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल्स ऑफ द लैंड वर्जन ऑफ द व्हीकल माउंटेड Mark 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। एंड इंडिया ऐसा 4th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिनके पास अब ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, राइट। एंड इसको टेस्ट कहाँ से किया गया था, इसको आंध्र प्रदेश से टेस्ट किया गया, करेक्ट। एंड नाउ USA, रशिया एंड चाइना एंड अब हमारा इंडिया के पास भी ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। नेक्स्ट, इन अप्रैल पॉप स्टार कैटी पेरी, ये इनके साथ 5 और वीमेन अभी स्पेस में गई थी, राइट, न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से। कौन सी कंपनी इनको ले गई, तो ब्लू ओरिजिन, न्यू शेफर्ड ये आपका ब्लू ओरिजिन का है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अप्रैल 2025 में सक्सेसफुली कंडक्ट करा प्रिलिमिनरी सी ट्रायल्स ऑफ 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम को फॉर द इंडियन नेवी अंडर TDF स्कीम ऑफ डीआरडीओ। तो किसके द्वारा, L&T के द्वारा करा गया। फिर आ जाते हैं बेटावोल्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपकी चाइना में लोकेटेड है। इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी डेवलप किया जिसका नाम है BV100, जो कि 50 साल तक एक सिंगल चार्ज पे ऑपरेट कर सकेगी। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश लॉन्च द 7th जनरेशन AI चिप जिसका नाम है आयरनवुड। तो ये आयरनवुड गूगल के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो कि एक AI चिप है। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडिया ने कमेमोरेट किया गोल्डन जुबली ऑफ देयर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, राइट, 50 साल पूरे हो गए हैं। 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, रशिया की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, रशिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था एंड रशिया से ही इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इन अप्रैल इसरो ने सक्सेसफुली डेवलप किया टेस्ट and tested the indigenously made nozzle divergence using satellite alloy for the 4th stage of which launch vehicle। तो PSLV के लॉन्च व्हीकल के लिए ये टेस्ट किया गया, पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, अभी अप्रैल में किस कंट्री ने लॉन्च किया अपना 4th इंडिजीनियस मिलिट्री सैटेलाइट को यूजिंग Falcon 9 रॉकेट ऑफ SpaceX। तो साउथ कोरिया ने अपनी ये मिलिट्री स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो कि 4th स्पाई सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, इंडिया ने डिस्पैच किया 2nd बैच ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू फिलीपींस अंडर $375 मिलियन डील, जो कि 2022 में साइन किया गया था। नेम द इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनी जो इस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व है। तो वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड फिलीपींस वो पहली कंट्री बन गया जो इंपोर्ट करा रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, अभी चाइना ने अचीव किया मेजर माइलस्टोन इन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने 10G यहाँ पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया इन सुनान काउंटी ऑफ हेबेई प्रोविंस।
नेक्स्ट, उस इंडियन नेवल शिप को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने टेस्ट फायर किया था मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको बैराक 8 के नाम से भी जानता है। अरेबियन सी में इसको टेस्ट फायर किया गया था। तो आईएनएस सूरत से ये टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 100 सेकेंड्स ग्राउंड टेस्ट किया ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का इन अप्रैल, मेकिंग इट अ क्रिटिकल एडवांसमेंट इन द इंडियाज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है डीआरडीओ। नेक्स्ट, नेम द सेकेंड जनरेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डाटा रिले सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना in April abroad Long March 8 3B rocket, right, in from southwest China। तो Tianling 205 ये वो आपका सेकेंड जनरेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डाटा रिले सैटेलाइट है। नेक्स्ट है Amazon.com इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च की 27 सैटेलाइट्स ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। ये बेसिकली क्या है? प्रोजेक्ट क्यूपर है, ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, सिमिलर टू दैट ऑफ स्टारलिंक। राइट, स्टारलिंक हम जानते हैं स्पेस एक्स की है, इलॉन मस्क की। ऐसी एक आ जाती है वन वेब। आप बता सकते हो ये वन वेब किसकी है? ये किस कंट्री की है या किस ऑर्गेनाइजेशन की है? नेक्स्ट इज आवर होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अडानी विल बी रिसेंटली सेटिंग अप अ 5000 megawatt of hydropower plant in which country? Second question, tell me recently, if I ask you, which state is hosting and which city in that state is hosting the 72nd Miss World pageant? Tell me. Third question, right, and this itself has been a story recently because the Miss World recently suggested that she will be dropping out of it because of some issue that took place. You tell me that issue also. Moving to the third question, tell me recently who inaugurated the first 3 nanometer chip design center and where this has been inaugurated. Fourth question, tell me recently Nai Disha, this is an initiative launched by which organization and what is this initiative? Fifth question, tell me recently which is the first beggar free city of India, right? Name that city. So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.